Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अनुभा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र पे आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए कार्यक्रम में ऑनलाइन आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ राजीव नागपाल। राजीव नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद सोनू। और अब हेडलाइंस के साथ है अनुभा रोहतगी। Thank you, Sonu. Domestic stock markets remain closed for a holiday. Asian markets trade mostly higher. Government approves 61 applications with an investment potential of over 19,000 crore rupees under the production-linked scheme. And auto major Mahindra & Mahindra hikes prices by 2.5% from today. घरेलू शेयर बाजार अवकाश के कारण बंद रहे। अन्य एशियाई बाजारों में अधिकतर बढ़त का रुख रहा। सरकार ने उत्पादन संबद्ध योजना पीएलआई के अंतर्गत 19,000 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश क्षमता वाले 61 आवेदनों को किया पारित और प्रमुख ऑटो कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने आज से अपनी कीमतों में 2.5% की वृद्धि की। घरेलू शेयर बाजार आज अवकाश के कारण बंद रहे। अन्य एशियाई शेयर बाजारों में आज अधिकतर बढ़त का रुख रहा। अमेरिका से जारी ताजा आंकड़ों से ये उम्मीदें पैदा हो गईं कि मुद्रास्फीति अपने शिखर के करीब है। जापान का निकेई और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स प्रत्येक 1.2% की बढ़त पर बंद हुए और दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में मामूली वृद्धि दर्ज हुई। जहां हांगकांग का हैंगसेंग 0.7% की बढ़त में रहा, वहीं सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 0.2% की गिरावट दर्ज हुई। व्यापारी आज होने वाली यूरोपीय केंद्रीय बैंक की बैठक के इंतजार में थे ताकि ये पता चल सके कि क्या इनका रुख भी बाकी केंद्रीय बैंकों के जितना ही कड़ा होगा या नहीं। आर्थिक खबरों में चीन के वाणिज्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने आज एक नियमित समाचार सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि चीन के वाणिज्य मंत्रालय को आशा है कि अमेरिका जल्दी से जल्दी चीन के उत्पादों पर शुल्क हटा देगा और चीनी कंपनियों पर कड़ा रुख अपनाना बंद कर देगा। उन्होंने ये भी कहा कि स्थिर और स्वस्थ द्विपक्षीय व्यापार संबंधों से वैश्विक सप्लाई चेन और वैश्विक आर्थिक सुधार दोनों को मजबूती प्रदान होगी। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक लंदन के फुटसी में कोई खास बदलाव नहीं हुआ था। हालांकि फ्रांस के कैक में 0.7% की वृद्धि थी और जर्मनी के डैक्स में 0.6% की बढ़त थी। क्या कहेंगे आप? आज जो हमने एशियाई बाजारों में अधिकतर बढ़त का रुख देखा है, हालांकि भारतीय बाजार बंद थे, लेकिन जो ये थोड़ा ट्रेंड रिवर्सल देख रहे हैं, इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं और कितना स्थायी मानते हैं? सर मुझे लगता है कि देखिए कुछ टाइम बाद, क्योंकि पिछले हफ्ते बाजार गिरे भी बहुत थे और नॉट ओनली पिछले हफ्ते, अगर आप बाकी एशियन मार्केट को देखेंगे तो वो रिलेटिवली अंडर परफॉर्मर रहे हैं पिछले ऑलमोस्ट 6 महीने में। तो आई थिंक प्रॉब्ली दिस इज वन ऑफ द रैंडम नॉइज जो होती है कि कुछ टाइम घटने के बाद जो थोड़ा सा बढ़ जाता है। कोई बेसिक ग्राउंड रीजन, फंडामेंटल रीजन ऐसा विजिबल नहीं लगता, गिवन द फैक्ट कि रशिया यूक्रेन इशू अभी वैसे ही बरकरार है। एंड जैसे कि भी आपने कहा कि शायद उन्हें द ओनली रीजन विच यू कैन सी इज कि शायद जो आपने भी बात करी चाइना की कंपनीज की, वो तो अगर वहां पे कुछ है तो शायद थोड़ा सा वो रीजन हो सकता है। बट कितना सस्टेनेबल है गिवन द फैक्ट कि इन्फ्लेशन नंबर यूएस में यील्ड्स वगैरह जितनी भी दिख रही हैं, उसके चलते बहुत कोई मेजर अप ट्रेंड आ जाए उसकी उम्मीद अभी फिलहाल गिवन द डेटा पॉइंट्स कम लगती है। Moving on to the U.S. markets, on Wall Street, key indices rallied to end sharply higher yesterday, powered by a recovery in interest-sensitive growth stocks as investors digested hot inflation data and a mixed bag of quarterly results.
Falling U.S. Treasury yields helped the tech-heavy Nasdaq lead all three major U.S. stock indexes higher, with semiconductors outperforming the broader market. So the Dow Jones Industrial Average rose 344 points or 1% to end at 34,565. The S&P 500 climbed 49 points or 1.1% to close at 4,447, and the Nasdaq Composite advanced 272 points or 2% to close at 13,644. JP Morgan Chase & Company said the first quarter earnings season off to an inauspicious start, reporting a 42% drop in quarterly profit. The downbeat results from the biggest U.S. lender sent its shares down 3.2%. But Delta Airlines results beat expectations, and it forecast a current quarter return to profit due to historically high demand. The shares jumped 6.2%. Strong demand also drove the Labor Department's Producer Price Index to a blistering 11.2% year-on-year growth rate, the hottest annual reading since the Labor Department started tracking annual data in 2010. Rajiv, you just mentioned the fact about the inflation figures coming out of US, coming out of UK at all-time high. Here also in India, we've seen inflation figures for March at 6.95%, which is the highest in the past very many months. Now, given the fact, and you were discussing the Asian markets as well. So given the fact that the markets will continue to witness volatility till the inflation scenario becomes clearer and the Russia-Ukraine war ends, what would be your advice to investors in this rising interest rate scenario, which is like happening now? Well, see, at this sort of time, if you look at it, obviously the one thing is that, volatility is going to increase. So in last 4 or 5 days, the mid-cap stocks have made a comeback. Now, most of the investors, retail investors, tend to get stuck in mid-cap stocks during this phase of outperformance. So right now, while the bullish sentiment in the mid-cap space makes a comeback, it would be advisable that retail investors should be very cautious in buying in what they're buying as far as the mid-caps and small caps are concerned. One. Secondly, even in this volatility, please continue with your SIPs. SIPs are not, are not something which you can discontinue any point of time in order to get the right return. So, as some of the mid-cap outperforms, probably rumor mills and narratives about certain stocks going to come up once again, as it always happens in a bullish market. So, that is another area which, people need to take what is spread through social media and all those things very carefully, because in bullish market, people tend to commit a mistake, but they only realize they have committed a mistake once the market corrects. Probably when what we saw towards the end of Feb, a lot of people were like panicky. What has happened there? 2-year returns, what their apps were showing, they just vanished in 2 days. So, in my opinion, while market will remain volatile, some mid-caps might outperform. Be very careful of narrative. Rest focus, once again, I'll say that investing in business is about, in stock market is investing in business. Stick to that principle and don't be greedy when the market, overall narrative is very bullish. Rajiv, we were, while talking about the rising inflation, one of the reasons which is being said to be behind the rising inflation the world over, not just in India, is the rising fuel prices, international crude fuel prices. Absolutely. But the fact of the matter is that the fuel prices, especially we talk about India, fuel prices were at a standstill for 4 months from October, and they started rising only on 22nd March. So the figures that have come out for March, that is 6.95%, the reasons have to be, more than just the rising fuel prices. No, there is fuel price is one thing. There has been an increase in some of the commodity prices. The price of whether it's palm oil, whether it's some of the ingredients, which specialty chemicals, which normally we don't talk about because they're industrial commodities. The price of all these things have gone up very sharply in the last couple of months. In fact, after a slight bit of cooling off, steel prices, literally everything, the price of everything has gone up in the world. One, because of the supply chain disruptions, and secondly, because of the fact that, when times are good, most of the commodity companies, they tend to kind of, they know that there is a window in which they can make abnormal profits, and which sustains them over a period of years when the prices are not very high. So they tend to kind of create artificial supply disruption also. So it's not only oil. It's look at the price of electrodes. Again, the problem is the slowdown in
shutdown in China, if let's say a very small part of one component from China is supposed to come, it doesn't arrive at time, then the whole batch of that particular product which use that as a raw material has to be stopped, and if that the supply gets impacted, so all those things, these all things, everything has contributed to this rising inflation. The question is till when it will impact, given the fact that similar kind of disruption was seen in 2020, but companies were able to adjust much faster. Would they be able to do it this time also? That has to be seen. In my view, probably they would be, because they, some alternative source have been kind of figured out. So this spike may cool down a bit, probably, let's say towards the end of June is my estimation. So राजीव, आप कह रहे हैं कि जो हाई कमोडिटीज या हाई इन्फ्लेशन का जो प्रेशर है वो जून तक थोड़ा आपको लगता है ईज ऑफ होगा. अगर हम अभी की भी बात करें तो सेक्टोरली विद इन सेक्टर्स कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं आपको लगता है जो इस हाई इन्फ्लेशन एनवायरनमेंट में शायद बेनिफिट भी कर सकते हैं, जिनको नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा? जैसे आपने कहा है जो कमोडिटीज से जुड़े हुए सेक्टर्स हैं, सो कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स आपको लगता है जो नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं होंगे, और कहाँ सबसे ज्यादा हम नेगेटिव इम्पैक्ट देखेंगे? देखिए सोनू, इस नेगेटिव इम्पैक्ट और पॉजिटिव इम्पैक्ट को दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा. एक नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द स्टॉक प्राइस. तो जो मेटल कंपनीज हैं वो उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, बिकॉज उनमें थोड़ा सा हर एक मेटल नहीं आप कह सकते, क्योंकि स्टील में भी कुछ इनपुट जाते हैं, आयरन उड़ जाएगा, बाकी चीजें कोकिंग कोल जाता है, उसके प्राइसेस बढ़ गए हैं. सो टू दैट एक्सटेंट व्हाट हैज हैपेंड इज दैट कुछ स्टील कंपनीज के प्राइसेस बढ़ रहे हैं लेकिन उनके मार्जिन उतने नहीं बढ़ेंगे. तो वो एक बिजनेस पे इम्पैक्ट हो गया. जहां तक स्टॉक प्राइसेस की बात है, लार्ज पार्ट ऑफ जो हम आज बात कर रहे हैं, ये आज से 4 हफ्ते पहले ही वॉज वेरी क्लियर इन द मार्केट्स कि दिस विल हैपन एंड दिस काइंड ऑफ ट्रेंड विल हैपन. प्राइसेस मूव अप हो गए. तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप बिजनेस के नंबर्स ठीक आते देखें लेकिन स्टॉक प्राइस उस हिसाब से रिएक्ट नहीं करें. कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन ऑफ, तो आई एम आंसरिंग के किन बिजनेसेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट होने के चांसेस कम है. उनमें से एक आईटी है, बिकॉज उनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हार्डली देयर इज एनीथिंग इम्पैक्ट ऑन देम. सेकेंडली मेटल आपने जैसा कहा, या कुछ स्पेशलिटी केमिकल्स हैं, वो स्पेस जो कि की रॉ मटेरियल इनपुट है, प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं टू मेक गुड्स, उन पे वो ऐसे बिजनेसेस हैं, कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे बिजनेस पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. बट स्टॉक मार्केट में क्या वो शेयर उस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, वो इंडिविजुअल कंपनी टू कंपनी पे डिपेंड करता है टू टेक अ कॉल कि अगर स्टील बढ़ के प्राइस कंपनी अच्छी करेगी तो कौन सी कंपनी स्टॉक बढ़ेगा. सो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर वेरी टू डिफरेंट थिंग्स. सो दीज आर द 3 सेक्टर वेयर आई थिंक इशू नहीं होना चाहिए. और अगर हम मार्च क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करें तो ऑलरेडी रिजल्ट सीजन शुरू हो गया है. टीसीएस, इन्फोसिस, इनके रिजल्ट्स आते हैं जैसे हमेशा शुरू में आते हैं आईटी कंपनीज के, मेजर आईटी कंपनीज के. कैसे देखते हैं आप जो रिजल्ट्स अभी तक आए हैं, और क्या उम्मीद है आपको आने वाले समय में जो बाकी सेक्टर्स हैं उनसे, उनके रिजल्ट से क्या उम्मीद है और कैसा इम्पैक्ट होगा उनका बाजार के सेंटिमेंट पे? देखिए, 2 रिजल्ट आए अभी तक मेजर, टीसीएस के और इन्फोसिस के. मार्जिन में प्रेशर एक्सपेक्टेड था, बिकॉज सम ऑफ द एक्सपेंसेस जो पहले नहीं थे वो रिज्यूम हुए हैं. मतलब ट्रैवलिंग एक्सपेंस, बाकी जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस थे, ऑफिस खुले हैं तो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस वगैरह बढ़े, तो कुछ थोड़ा सा मार्जिन में उनके फर्क आया. तो शायद हो सकता है इन्फोसिस एक्सपेक्टेशन से नीचे था, तो थोड़ा मंडे को जब बाजार खुले तो थोड़ा शायद नीचे खुले. लेकिन द फैक्ट इज के बिजनेस को टेल विंड ज्यादा, तो शायद 2, 4, 5, 6 दिन की करेक्शन के बाद वी माइट सी अगेन दैट स्टॉक आइदर आउट परफॉर्मिंग और परफॉर्मिंग इन लाइन विद द मार्केट. सो इन माय ओपिनियन जो आईटी है वो रहेगा, मेटल के रिजल्ट्स हैं वो बेटर आएंगे. एक क्षेत्र जहाँ पे रिजल्ट उम्मीद से बेटर हो सकते हैं वो प्रॉब्ली बैंकिंग है, क्योंकि इस क्वार्टर तक आगे देखते हैं कि कैसा क्रेडिट ऑफटेक का नंबर रहता है या कैसा इंटरेस्ट रेट की मूवमेंट की वजह से उनकी इनकम इम्पैक्ट होती है. लेकिन ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे फिलहाल जो पिछले जिस क्वार्टर के रिजल्ट आ रहे हैं, देखिए इस क्वार्टर में भी एक कोविड की वेव थी, लॉकडाउन नहीं हुए, ज्यादा लॉकडाउन नहीं हुए, लेकिन थोड़ा सा इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन द रूरल इकोनॉमी वॉज हायर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज इन्फ्लेशन की वजह से थोड़ा सा रूरल डिमांड पर इम्पैक्ट आया था.
तो वो सारी कंपनी एफएमसीजी कंपनीज है जिसमें बहुत बेटर नतीजे आने की उम्मीद नहीं है, बिकॉज वहाँ एक तो वहाँ प्राइसेस अप हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, और थोड़ा सा मार्जिन उनका जो रॉ मटेरियल कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है वो ज्यादा रहा है। सो उसके चलते थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वी माइट सी सम हेडविंड्स आउट देयर इन सेक्टर्स के अंदर एफएमसीजी वगैरह में। We will continue with this discussion and the program Market Mantra, but after a short break. उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है। राजीव, आपने अभी बैंकिंग सेक्टर की बात की कि आपको उम्मीद है कि वहां के रिजल्ट्स अच्छे होंगे। आयरॉनिकली आज जो बिगेस्ट यूएस बैंक है उनमें 42% ड्रॉप इन क्वार्टरली प्रॉफिट आया है। अगर हम भारतीय ऑटो इंडस्ट्री की बात करें, क्या लगता है आपको ऑटो इंडस्ट्री अभी कितने चैलेंजिंग एनवायरनमेंट से गुजर रही है और उनके क्या प्रोस्पेक्ट्स लगते हैं आपको ऑटो कंपनीज के? देखिए, चैलेंजिंग से ज्यादा वो एक ट्रांसफॉर्मेशनल दौर से गुजर रही है, फ्रॉम आईसी इंजन टू ईवी, एंड द फैक्ट इज दैट ईवीज आर फार मोर एफिशिएंट इन एवरी सेंस, मतलब जो कंज्यूमर की पॉकेट है उस पर भी, और जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट वगैरह के हिसाब से भी इट्स फार मोर पॉजिटिव। द ओनली थिंग इज कि उसकी जो कैपिटल कॉस्ट है अभी हाई है, और मेरे को ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसमें एक चीज देखनी पड़ेगी, जो कंपनीज एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं उनकी बैलेंस शीट की पावर इतनी है कि वो जिस ट्रांसफॉर्मेशन जो ट्रांजिशन होगा उसको वो आराम से ले लेंगे। ऐसा हो सकता है मतलब आपको 1 साल 2 साल उनके प्रॉफिट जो है वो स्टैग्नेट होते दिखें या थोड़ा उतना ना बढ़े, तो वो एक फेज रहेगा जहाँ पे हो सकता है। लेकिन आई वोंट से के चैलेंजिंग इन द सेंस कि उनकी एग्जिस्टेशनल प्रॉब्लम हो जाएगी कि वो रहेंगी या नहीं रहेंगी, थैंक्स टू द अमाउंट ऑफ मनी दे हैव ऑन देयर बैलेंस शीट। तो एक क्षेत्र में थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा टाइम लग जाएगा, वो उसमें देखते हैं कौन इमर्ज होता है एज अ विनर, वो है 4 व्हीलर स्पेस। उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी आने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ पे उस तरीके से नंबर बढ़ रहे हैं, लेकिन वो कितना सस्टेन करेंगे कितने टाइम तक, बिकॉज अभी बहुत परसेंटेज वाइज बहुत ग्रोथ दिखती है क्योंकि बेस बहुत स्मॉल है। तो हाउ मच दे विल ग्रो ओवरऑल, we'll have to see and wait and see about that. और अगर हम फाइनेंशियल ईयर की बात करें, आपको क्या लगता है अभी तक जिस तरह का परफॉर्मेंस आपने देखा है, क्या पिछले फाइनेंशियल ईयर की जो अराउंड 17 to 19% ग्रोथ हमने देखा था बाजार में, सेंसेक्स में, निफ्टी में, आपको उम्मीद है कि वो रिपीट होगा? नहीं, मेरे को देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, it's very tough to make a guess. हर साल ऐसी ग्रोथ हो जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। देखिए, इंडेक्स के कंपोनेंट में इस बार आईटी एक्सपेक्टेड लाइन पे रिजल्ट दे रहा है, वैल्यूएशन उनकी चीप नहीं है, एक्सपेंसिव तो नहीं मैं कहूंगा। मेटल एक जिसकी बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है वो भी ठीक ठाक से रिजल्ट देगा। सो जो कंपोनेंट्स हैं निफ्टी के, उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको शायद लगेगा कि इंडेक्स की जो अर्निंग्स है वो बेटर बढ़ गई, बट आई डोंट थिंक सो के उतनी जो आपने परसेंट की बात करी 17, 18, 19, 20% वो आए इस साल में। आई थिंक एक थोड़ा सा करेक्शन टाइम वाइज आएगा, बिकॉज ऑफ द नॉट ओनली बिकॉज ऑफ अर्निंग बट बिकॉज कि ग्लोबल रीसेट भी होगा टू एज दी हाइक स्टार्ट हैपनिंग, क्योंकि नॉर्मली देखा गया है कि इंटरेस्ट रेट जब बढ़ते हैं यूएस में तो पहली 4-5 हाइक में बहुत ज्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं होता, बट जहाँ पे फिर वो इंटरेस्ट रेट कंजम्पशन को इम्पैक्ट करना शुरू कर देते हैं, उस टाइम पे थोड़ा सा यू फाइंड things becoming tougher for equity market. So it might take time. So I'm not to say that equity will not outperform other asset classes, but जो pace of outperformance है वो थोड़ा शायद इस आने वाले 2-3 क्वार्टर तक शायद थोड़ा कम हो जाए before we see any other strong directional movement. Rajiv, the World Bank has now slashed, we talk about a wider economy, the World Bank has slashed India's financial year 2023 growth forecast
to 8%, which was earlier 8.7% in January. Now, there are many reasons the World Bank has said, and the World Bank has also said that because of the escalation in the Russia-Ukraine war, this could scare the investors from emerging markets like India and lead to a capital flight to safe havens of the West. Now, that is also going to impact the markets. We've already seen that foreign investors have been, exiting the Indian market since October. So even that is going to have an overall impact on the markets. See, to me, institutions like World Bank, rating agencies are nothing more than a forensic doctor. That's it. I give no importance to what they project, what they say. Their reports which are coming now, as you rightly said, FIs have been net sellers for last almost 6 months. They started selling in October, and they've sold more than what they sold even in the time of financial crisis. But look at our index, look at our markets. They have done extremely well, and as compared to others. And they are, it's unlike like 15 years back when if this would have happened, our market would have probably corrected more than 40-45%. But nothing much has happened for a simple reason: there is a countervailing force. So this so-called there will be a flight of capital. If that would have been to happen, the currency markets would have been reflecting it far now. So again, if you look at the historical track record of these reports, whether it's rating agencies, whether it's World Bank, their upgrades don't, they come late, and their downgrades are also, to be very honest, as far as the market is concerned, I don't think anybody in market even listens to them. I mean, forget giving, thinking that what they are saying is going to impact. But they're too late. I mean, they're too late in the reports. And of course, there is, as far as rating agencies are concerned, they are fully biased. I mean, like they are biased look at the strength of the balance sheet of a country as India and look at our rating. What have they given us? It's a clear reflection of the bias which they have against India. So I don't give importance to, what these rating agencies and World Bank and IMFs of the world say. राजीव, एक एस्पेक्ट पर आपकी ब्रीफ सी रिस्पांस चाहेंगे. बॉन्ड यील्ड्स 7% को क्रॉस कर गई है भारत में. आपको लगता है कि बॉन्ड्स को भी जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अपने पोर्टफोलियो में कुछ प्रतिशत एक देना चाहिए अलॉटमेंट? देखिए, आपके डेट हमेशा आपके पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए, बिकॉज दैट इज समथिंग विच एसेट एलोकेशन की स्ट्रैटेजी के हिसाब से डेट एंड अनफॉर्चुनेटली गोल्ड भी आप कह सकते हैं, बिकॉज हमारी यूएस डॉलर डिनोमिनेटेड सेविंग्स सिर्फ गोल्ड के फॉर्म में हो सकते हैं, तो गोल्ड भी आपको रखना थोड़ा सा जरूरी है. तो एसेट एलोकेशन के हिसाब से यस, डेट हैज टू बी देयर इन द पोर्टफोलियो. द क्वेश्चन इज डिफरेंट कि आप इस टाइम लें कि सोचें क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं तो एग्जिस्टिंग डेट की जो बॉन्ड के प्राइस में वो कम हो जाएंगे, तो वो थोड़ा सा एक अलग इशू है. दैट्स अ वेरी डिफरेंट डिबेटेबल दिस थिंग. बट यस, डेट एज एन इन्वेस्टर यू शुड हैव some amount of debt in your portfolio, because that is what saves when there is rain, thanks to what US Fed says and does. हम बात कर रहे थे इन्फ्लेशन की. लेते अगली खबर जो कुछ उसी से जुड़ी हुई है. ऑटो कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपने वाहनों की कीमतें 2.5% बढ़ा दी हैं. कंपनी ने आज ये जानकारी दी. वाहन के मॉडल और वेरिएंट के आधार पर कंपनी के वाहनों के एक्स शोरूम मूल्य 10,000 से लेकर 63,000 रुपए तक बढ़ जाएंगे. ये मूल्य वृद्धि आज से लागू हो जाएगी. क्या कहेंगे आप? इज इट अ वेरी जस्टिफाइड मूव, ये देखते हुए कि सारे जो इनपुट प्राइसेस हैं उनमें हम खासा एक उछाल देख रहे हैं ग्लोबल प्राइसेस में? देखिए सोनू जी, एज फार एज जस्टिफिकेशन इज कंसर्न, वो तो जस्टिफिकेशन इज अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम. आई थिंक इट्स समटाइम इट रिफ्लेक्ट्स दैट द इंक्रीज इन द प्राइसेस रिफ्लेक्ट कि आपके ब्रांड में उतनी आपके ब्रांड में इतना मोटा है कि आपका प्रोडक्ट प्राइस बढ़ाने के बाद भी बिक जाएगा. सो टू मी आई थिंक what it reflects is the strength of the brand. And yes, I mean, to some extent, this is what we are going to see happening in other, by other companies also. Some of them not going to make noise. Some, of course, are going to make noise when it happens. Moving on to the other news, the government has approved 61 applications with an investment of 19,077 crore rupees under the production-linked incentive PLI scheme for textile sector. Briefing media in New Delhi today, Textile Secretary UK Singh said a total of 67 proposals were received, of which 61 have been approved.
He said the projected turnover by these companies is expected to be around 1,85,000 crore rupees over a period of 5 years. Mr. Singh said, as per the projection made by these companies, around 2,40,000 employment would be generated. Last year, the Union Cabinet had approved the production-linked incentive scheme for textiles. Under it, incentives worth 10,683 crore rupees will be provided over 5 years. The scheme will promote production of high-value man-made fabric, garments and technical textiles in the country. A very brief comment, Rajiv, on this the decision today that is the government has taken to approve these applications under the PLI scheme. Well, I think for every sector, I mean, this has been from an investor perspective. This has been something which has been cheered, and on an overall economic basis, I think this is something which is going to change things for in long term in a very positive manner. I mean, this is one thing which China +1, that +1 to get the momentum. These things are required, and any sector which gets it, there are. I mean, it is cheered by the market, and rightly so. और आपको लगता है कि ये टारगेटेड अप्रोच जो है, जो टारगेटेड सेक्टर्स, जो एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर्स एंड सनराइज सेक्टर्स का जो मिक्स है जिसमें पीएलआई इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट इज ऑल्सो वेरी कहें कि उसका रिजल्ट ज्यादा बेटर आएंगे. Yes, I mean targeted. It always should be targeted because आप ब्रॉड बेस ब्रश से नहीं कर सकते, क्योंकि आप एट द एंड ऑफ द डे आप रेवेन्यू सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो आप उसका अपनी रेवेन्यू सेक्रीफाइस का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखेंगे. अगर मैं स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो ऑब्वियसली आई थिंक टारगेटेड, एंड सेकेंडली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज वन ऑफ द नीड. आई मीन दैट्स वन ऑफ द कोर दिस थिंग ऑन विच द पॉलिसीज आर बेस्ड. वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. Moving on to commodities, global crude oil prices slipped today amid thin trading volumes ahead of a public holiday tomorrow, as traders weighed a larger than expected build in U.S. oil stocks against tightening global supply. So Brent futures declined $1.17 to trade at $107.61 a barrel. U.S. crude oil futures dropped $1 to $103.25 a barrel. Rajiv, we see again a lot of volatilities happening in global crude oil prices. Declined today, but they were up yesterday. So, do you see at any point the prices coming down to around $100 or even below that? I think I see there's a lot of speculative money which has gone into commodities, especially oil. So the moment there is a news that things are settling down on the Ukrainian and Russian front, I think there's going to be a sharp correction in these prices. Because, and see, when there is a lockdown, there is a slowdown in China and all those. If there is a global slowdown in economic activity, there is no reason why oil prices should move up. So there is a huge element which is right now there. And it has happened in past also. It's not the first time we are seeing the price at these levels. It has happened, and when the correction happens, it is very sharp and swift because the money moves with a click from one asset to another asset. सो आरबीआई ने जो $100 प्रति बैरल का एजम्पशन लिया है, अपने जो रिवाइज्ड उन्होंने दिया है 7.2% जीडीपी ग्रोथ, आपको लगता है कि ये एक रीजनेबल उन्होंने एजम्पशन लिया है $75 से $100 का जो उन्होंने बढ़ा दिया है? देखिए, जहां तक मेरे को लगता है वो दे डोंट वांट टू बी कॉट ऑन अ रॉन्ग फुट. कि नंबर जैसे दे दो जिसमें आपने पहले मान लीजिए अगर एवरेज 85 या 80 रहनी है, तो उन्होंने बीइंग एज राइटली सो कंजर्वेटिव रह लो. अगर कम हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज 100 के आसपास रहेगा, बिकॉज दैट इज एन एरिया वेयर इफ यू लुक एट इट द मोमेंट इट क्रॉसेज अबव देन दी डिमिनिशिंग डिमांड थोड़ा सा डिमांड थोड़ा इम्पैक्ट होता है. सो आई थिंक दिस इज अ रीजनेबल मूव, एंड राइटली सो, बिकॉज सेंट्रल बैंकर्स शुड बी कंजर्वेटिव, एंड आरबीआई हैज, in my opinion, probably I'm not an economist to give them, sit on judgment on them, but I think it's always better to be conservative when you are making your forecast for any of these things, especially with commodities like an oil. जी, थैंक यू सो मच राजीव, कि आप आए और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी दी. धन्यवाद. And before we close, a reminder of the headlines. Domestic stock markets remain closed for holiday. Asian markets trade mostly higher. Government approved 61 applications with an investment potential of over 19,000 crore rupees under the production-linked scheme. And auto major Mahindra & Mahindra hikes prices by 2.5% from today. And that's it in this edition of Market Mantra. Namaskar.